जय श्री माता जी। अभी हम सब लोग श्री माता के सामने नतमस्तक होके वंदन करके कुंडली उठा के बंधन लेंगे। विल ऑल कलेक्टिवली बो डाउन टू श्री माता जी, देन रेज और कुंडली टेक बंधन। कुंडली उठा के बंधन लेने के बाद दोनों हाथ श्री माता जी को हैव बोथ और पाम्स टुवर्ड्स श्री माता जी, और महसूस करते रहेंगे दोनों हाथों में समान तरीके से वाइब्रेशन आ रही है। विल कंटिन्यू टू ऑब्जर्व इफ यू गेटिंग इक्वल वाइब्रेशंस इन बोथ और पाम्स।
पहले अपना राइट हैंड धरती माँ पे रखेंगे। विल पुट आवर राइट हैंड ऑन मदर अर्थ। और महसूस करेंगे राइट हैंड से कुछ धरती में जा रहा है कि नहीं, लेफ्ट हैंड से कुछ अंदर आ रहा है कि नहीं। विल ऑब्जर्व इफ समथिंग इज गोइंग डाउन फ्रॉम आवर राइट हैंड टू मदर अर्थ एंड इफ समथिंग इज कमिंग इन फ्रॉम आवर लेफ्ट हैंड। श्री माता जी, प्लीज रिमूव ऑल आवर पास्ट थॉट्स, conditionings and imbalances in our ईडा नाड़ी and give it to mother earth। श्री माता जी, कृपा करके हमारी ईडा नाड़ी में जो भी भूतकाल के विचार है, जो भी असंतुलन है, जो भी कंडीशनिंग्स है, उसे कृपा करके उसे धरती में विलीन कर दीजिए माँ। वही महसूस करते रहेंगे लेफ्ट हैंड की कितनी उंगली में ठंडी हवा अंदर आ रही है। विल ऑब्जर्व हाउ मेनी फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट palm आर वी absorbing cool air। आलू भाग से ही महसूस करते रहेंगे। विल कंटिन्यू टू ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ हेड इफ यू आर absorbing cool air in all the fingers of the left palm। महसूस करते रहेंगे लेफ्ट हैंड की सभी उंगलियों में ठंडी हवा अंदर आ रही कि नहीं, इंक्लूडिंग द मूलाधार, भवसागर एंड सहस्रार। और मूलाधार, सहस्रार और भवसागर भी महसूस करेंगे। अभी अपने तालु बग से महसूस करते रहेंगे लेफ्ट हैंड की सभी उंगलियों, भवसागर, सहस्रार और मूलाधार। पांच उंगली, मूलाधार, भवसागर, सहस्रार सभी में ठंडी हवा अंदर आने की नहीं महसूस करेंगे। We'll continue to observe if we are absorbing cool air in all the five fingers, the Bhavsagar area of the palm, the Muladhara area of the palm, and the Sahasrara। श्री महाकाली भैरवनाथ साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
राइट हैंड ऑन आवर लैप, राइट हैंड अपनी गोद में ले लेंगे, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर, लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स स्काई। फिर से अपने तालु भाग से महसूस करते रहेंगे राइट हैंड में क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड में क्या हो रहा है। फ्रॉम टॉप ऑफ आवर हेड विल ऑब्जर्व व्हाट्स हैपनिंग इन आवर राइट palm, व्हाट्स हैपनिंग ऑन आवर लेफ्ट palm। Hey Mataji, please remove all my future thoughts, action, planning and heat from our पिंगला नाड़ी and give it to ether। श्री माता जी कृपा करके मेरे पिंगला नाड़ी में जो भी भविष्य के विचार है, जो भी प्रणालिका मैं बना रहा हूँ, जो भी कर्मी पिंगला नाड़ी में है, उसे कृपा करके आप आकाश में विलीन कर दीजिए माँ। श्री महासरस्वती, श्री हनुमान साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात् श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपना तालु भाग से महसूस करते रहेंगे राइट हैंड की कितनी उंगली में ठंडी हवा आ रही है, लेफ्ट हैंड से कितनी उंगली में से ठंडी हवा जा रही है। We'll continue to observe how many fingers of the right palm are we absorbing cool air and if we're ventilating through our left palm। अभी देखेंगे अपने तालु भाग से कि राइट हैंड की सभी उंगलियों में ठंडी हवा अंदर आ रही है कि नहीं और लेफ्ट हैंड से जा रहा है कि नहीं। From top of our head, we'll continue to observe if you're absorbing cool air in all the fingers of the right palm and ventilating through our left। अभी दोनों हाथ अपने गोद में, विल ब्रिंग बोथ आवर palms down on our lap। We'll take our right hand and put it on our forehead। राइट हैंड अपने फ्रंट आज्ञा पे रखेंगे, सर को थोड़ा झुकाएंगे और यहाँ लॉर्ड्स प्रेयर लेंगे। विल टेक लॉर्ड्स प्रेयर हियर। आवर फादर हु आर्ट इन हेवन, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth
as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, power and glory forever and ever. Amen. हाथ वही रखे रहेंगे थोड़ी देर के लिए. We'll have our hand there for some time. Right hand नीचे ले आएंगे. Bring right hand down. We'll take our right hand on top of the head. तालू बाग पे रखेंगे. We'll put our right hand on top of the head. Rotate the scalp 7 times. 7 बार गोल गोल घुमाते हुए श्री माता जी कृपा करके हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कर दीजिए. श्री माता जी प्लीज स्ट्रेंथन आवर सेल्फ रियलाइजेशन 7 times. 7 बार. आहिस्ता आहिस्ता हाथ को ऊपर उठाएंगे, फिर अपने गोद में ले आएंगे. We lift our hand little bit above and then bring it back on our lap. Observing what's happening on top of our head, we will take the 3 महामंत्रास. सर के ऊपर क्या हो रहा है महसूस करते हुए 3 महामंत्र लेंगे. त्वमेव साक्षात् श्रीमहालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री
सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। थोड़ी देर के लिए अपना सहस्रार का आनंद लेते रहेंगे और दोनों हथेली का भी from top of head. We'll continue to enjoy our sahasrara on top of the head and both palms. Now we'll put our right hand on the left heart. Right hand left heart पे रखेंगे और यहाँ morning prayer लेते हैं. We'll take morning prayer here. There's a beautiful sloka which I had told Mahatma Ji that he should put it first. He said, I was a very small girl, but he listened to me, which is a beautiful thing. Pratar namami. The first thing you have to say, Pratar namami rudhi sanspuradma tattvam satchit sukham paramahansa gatim turiyam. Meaning, early in the morning, I pray to that principle of my spirit, which is the truth, the attention and joy, so that I should go to the highest state of my ascent. Samspuradma tattvam satchit sukham Paramahansa gatim turiyam yat swapna jagar sushupta mavaiti nityam tad brahma nishkalamaham nacha bhuta sangha. अर्थ कळला का? प्रातर नमामि, मैं सवेरे उठ करके नमस्कार करता हूँ. हृदय संस्फुरात्म तत्व, हृदय में स्फुरन पाने वाले उस तत्व को, कौन सा तत्व है? डिवाइन लव. उस तत्व को मैं याद करता हूँ, उसको मैं नमस्कार करता हूँ. प्रातः नमामि हृदय संस्फुरात्म तत्वम सच्चित सुखम. सच्चित सुखम जो सत्य है, चित है और सुख है. परमहंस गति तुरीयम, तुरीय दशा उसे कहते हैं जिसमें आप आ गए. पार होने का मतलब है तुरीया. आप उस दशा में आ गए हैं, परमहंस गति की दशा में आ गए. परमहंस गति तुरीयम, उस दशा का, उस अवस्था का मैं नमस्कार करता हूँ. अभी तो जो आए नहीं वो गा रहे हैं, लेकिन आप आ चुके. प्रातः नमामि हृदय संस्फुराद तत्वम सच्चित सुखम
परमहंस गतिं तुरीयम यत् स्वप्न जागर, जो स्वप्न जागर, स्वप्न में जागृतावस्था में सुषुप्ति मवई की नित्य, सुषुप्ति अवस्था में सब में नित्य रहता है। चाहे आप जागते रहें, चाहे आप सोते रहें, चाहे आप सबकॉन्शियस से रहें, सुषुप्ति माने सबकॉन्शियस में, और उससे भी अनकॉन्शियस में रहें, जहाँ वो नित्य रहता है। यत् स्वप्न जागर सुषुप्तम अवैति नित्यम तत् ब्रह्म निष्कलमहम, वो अलेपा, वो निर्लेप ब्रह्म मैं हूँ, न च भूत संघ, मैं ये जो भूत संघ है, भूत संघ माने 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर मन बुद्धि जो है वो मैं नहीं, लेकिन वो ब्रह्म है जो नित्य अविनाशी हमेशा हर स्थिति में रहता है। इस श्लोक को याद कर लेना चाहते हो। प्रातर नमामि विधि संस्फुरात्म तत्व सच्चित सुखम परमहंस गतिं तुरीयम यत् स्वप्न जागर सुषुप्त मवैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संघ। ये हम लोगों के लिए जो रियलाइज हो गए हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मंत्र है कि हम वो हैं जो निर्लेप, निरंजन, निराकार ब्रह्म है। हम ये जो भूत संघ है, जो पंच महाभूत मिलकर के उनके संघात से बना हुआ जो बाहर का ढकोसला है, वो नहीं, जो अविनाशी अंदर विराजता है, वही हम हैं। ये तभी होगा जब हमारा चित्त उसमें बैठे। चित्त तो वहां बैठ गया, बिल्कुल बैठ गया है, किंतु वो चित्त अभी भी बाहर की ओर दृष्टि की ओर। उसे जैसे आप अंदर की ओर दृष्टि कर लेंगे, आप परमहंस गति के दशा में बैठेंगे। उस गति पर है, आपको बिठा दिया है उस गति पर कि आप परमहंस हैं। लेकिन परमहंस को अपने जो कीचड़ से लगे हुए पैर हैं उन्हें साफ करके और अपने आसन पे उस इज्जत के साथ बैठ जाना चाहिए, जैसे कि कोई राजा अभिषेक के बाद बैठ जाता है। We'll bring our right hand back on our lap, right hand अपने गोद में ले लेंगे और अपना सहस्रार हाथ में और अपना तालु भाग में अपना सहस्रार का आनंद लेते रहेंगे. We'll continue to enjoy our सहस्रार on top of the head and सहस्रार in both our palms. अभी अपना राइट हैंड सर के 2 इंच ऊपर. We'll take our right hand 2 inches above the head. We'll observe if vibrations are coming and if the ब्रह्मरंध्र is open. महसूस करेंगे कि वाइब्रेशंस आ रहे कि नहीं और ब्रह्मरंध्र खुला रह रहा है कि नहीं. राइट हैंड को थोड़ा और ऊपर ले जाएंगे. विल टेक आवर राइट हैंड लिटिल बिट अप 4 इंचेस अप, 6 इंचेस अप, 6 इंच ऊपर. राइट हैंड 8 इंचेस अप, 8 इंच ऊपर. राइट हैंड 10 इंच. चित्त को वहां छोड़ के राइट हैंड नीचे ले आएंगे. लिविंग और अटेंशन देन विल ब्रिंग आवर राइट हैंड नाउ. लेफ्ट हैंड सर के 2 इंच ऊपर. लेफ्ट हैंड 2 इंचेस अबव द हेड. फिर महसूस करेंगे वाइब्रेशन आ रहे कि नहीं और ब्रह्मरंध्र खुल रहा है कि नहीं.
You'll observe if vibrations are coming and the Brahmanandra is opening. लेफ्ट हैंड थोड़ा ऊपर ले जाएंगे. विल लिफ्ट आवर लेफ्ट हैंड 4 inches higher, 6 inches higher. Change. 8 8 inches higher, 10 inches higher. 10 इंच. जितना ऊपर ले जा सकते हैं ले जाएंगे. विल टेक आवर लेफ्ट हैंड एज हाई एज वी कैन फील द वाइब्रेशन. चित्त को ऊपर छोड़ के दोनों हाथ नीचे. Leaving our attention up there, we'll bring both our palms down. We'll continue to let our attention settle there. चित्त को वहां ऊपर आहिस्ता आहिस्ता सेटल होने देंगे. चित्त को वहां खुलने देंगे. We'll let our attention settle there and absorb vibrations from there. जैसे वहां अटेंशन खिलने लगता है, हम हाथों में भी फर्क महसूस करते रहेंगे. We'll let our attention nicely open up there and observe the changes in both our palms too. इसी स्थिति में माँ का स्पीच का आनंद लेंगे. वी विल कंटिन्यू टू एंजॉय श्री माता जी अमृतवाणी हियर. नाइनटीन 1995 शिवरात्रि पूजा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया. Today we have gathered here to do the puja to Sadashiva. The one which is reflected within us is the Shiva, which is the pure spirit. This pure spirit within us is the reflection of God Almighty, Sadashiva. It's like the sun that falls in the water and gives a clear reflection, or else it falls on the stone. It doesn't give any reflection at all. If you have, say, the mirror, the sun will not only fall on the mirror, but will reflect.
back its light. In the same way, in the human beings, the reflection of God Almighty is expressed in the way your personality is. If your personality is clean and clear, innocent, then that reflection could be like a mirror. Thus the saintly people, they reflect God Almighty in the proper manner, in the sense that their own identification with wrong things is no more. When there is no such identification, and when a person is absolutely the pure spirit, then the reflection of God reflects into others. Luckily, you all have got your self-realization. That means the reflection of God Almighty is already working into your attention. The attention is enlightened by the power of the Spirit. The power of the Spirit is that it is a reflection. That means the reflection is never identified with the mirror or with the water. It is there till the sun shines. And when there is no sun, there is no reflection. So when you are in Sahaja Yoga, you have cleansed out yourself. Your Kundalini has also cleansed you. And now you are pure personalities. That's why this reflection is clearer and clearer, and people see it. See it on your face, they see it in your body, they see it in your work, in your behavior, in everything. It is difficult for people to really believe in themselves that they could be the reflection of God Almighty. They have some sort of a complexes about themselves, I think, that they cannot understand how they have suddenly become the reflection of God Almighty. But they have a capacity, and they can become the reflection of God Almighty, for which they have to have faith in themselves, faith in their ascent, to believe that we have become that. The confidence in Sahaja Yoga is very important. Without the full confidence, you cannot achieve your ascent that you have seen. Even in my lectures I have to tell them that we have to have full self-confidence. But confidence doesn't mean by any chance your ego, your aggressiveness. If you are confident, you are least aggressive. There is a story, a Chinese story, very interesting one, that one king wanted his cocks to win in the race they have about the cockfighting. So somebody said that there is a saint, if you can take your cocks to him, he'll make them so strong that they will definitely win this race. So he took his two cocks and gave it to the saint, and he said, I want you to give them all the strength
uh, to fight this race. After 1 month, the king came and took these 2 cocks and put them in the arena where there were many other cocks also. So the cocks started fighting and attacking these 2 cocks. But these 2 cocks were just standing very patiently, absolutely calm and quiet. Any kind of attack, they were just looking at it as a fun. And all the cocks got tired and they ran away from the arena, and that's how these 2 cocks won the game. This is what it is for us to understand. That for a person who is detached, he can never be attacked. We are attacked by so many identifications we have. Firstly, our family, then our country, then our religion, then all kinds of things, racialism. All these identifications really make us weak because they attack us all the time and put confusion into the minds of Sahajogis I have seen. The reason is you must have confidence in Sahaja and confidence in yourself that you are on the right path and that you are now saved. And nobody can attack you because you are the complete protection of the divine. People may follow any religion, they may follow any guru, they may follow anything, but they have fear all the time that will be attacked. And they are afraid to say things which they should say. They have no discretion even to know what is to be said. With the proper understanding that you are the pure spirit, if you believe in that, then you will be surprised that you will be very confident about what you are doing. In that way, we can say that we have also another great advantage, is that we are in the collective. We can find out in the collective how are we behaving, what is the reaction in the collective. In the collective, it's a person who is very subtle. He need not talk too much. He need not say much. He could stand like the cocks I told you about. But his depth can be felt. You can feel a person of that caliber, that he is such a deep person that he doesn't want to aggress. He feels protected within himself. So this protection we have to feel not mentally but within ourselves. And once you have that gravity, that feeling, nobody can attack. The attacking person himself is insecure, or maybe he is ill-bred, maybe he is not yet a Sahajogi. So you have to just have a kind of a gracious view about the person. Like Shiva was, we should say, Sadashiva's character is known that he is the one who is to forgive anyone. Anybody who did penance, like standing on their heads, or standing on one foot, or not eating their food, or all kinds of penances, he used to be so disgusted that he would say, all right, what do you want? Take it. And he also gave blessings to many Rakshasas, as you have heard. And so many Rakshasas were blessed by him because he got fed up with their penances. There were so many stories about Sadashiva giving a blessing to people, even to Ravana, which is a very interesting story about Ravana. That Ravana did lots of penance. I don't know what he did, how much he must have starved with his 10 heads, and what
I mean, if one mouth is there, you feel so hungry. With 10 mouths, I don't know what he must have done to do that kind of a penance that Shiva just got fed up, you see. His compassion is so great, he thought, let this man have whatever he likes. So Ravana went to Shiva, and Shiva said, what do you want? Why are you doing all this to yourself? So he said that I want to have a blessing. He said, what blessing? First you promise that whatever I ask for, you will give me. He said, of course, if it is in my power, I'll give. It's a very interesting story. So he said, I want to have your wife, because he knew his wife is Adishakti. And if he gets the Adishakti as a partner with him, he can do wonders. So he asked that I should get your wife as my partner. Now, it was very difficult, you see, for him to take such a decision, to give him to this devil. But in compassion, he did it. And all these events, you see, really show that how his compassion works out things. As a result, it was decided that his wife Parvati had to go with this horrible fellow. But Parvati's sister was Sri Vishnu, that is Sri Krishna, and he said to himself that I can't allow my sister to go with this devil, I must do something about it. The most mischievous one is Sri Krishna. So what he did was to make him feel like going for the bath. So he felt shy, he put the lady on one side and he went to the bath. Now Shiva had warned him that you better be careful, because this Mother Earth is the mother of this lady, and never put her on the Mother Earth. You must carry him all the time on your back. So when he reached a certain point, this Sri Krishna created a mischief and he felt like going. So he put her down. As soon as he put her down, the Mother Earth sucked her in, and he didn't know what to do. Second time again he tried. And he again went to Shiva and he said, see now, this is what you have promised and this is what he's doing. So he said, I had warned you that her brother is a very mischievous fellow and he'll some or other manage. So you better be careful. This time you don't listen to him. Don't put her on the ground, whatever it may. So this time he did another try, we can say, and carried her on his back. Suddenly he found a little boy. It was Sri Krishna himself, laughing at him. She said, why are you laughing at me? Oh my, why are you carrying this old woman on your back? She has no ornaments. He said, she's the goddess. He said, no, she has no ornaments. She's wearing nothing. How can she be the goddess? So, you see, in India, that's a proverb we use. Some lady who lives without any ornaments or anything, that she's like the Lanka Parvati. So he was carrying her to Lanka. And when he looked at her up, he saw a very old woman without any teeth, laughing at him. He got such a fright, he threw away. That's Mahamaya. Then the third situation was, he went and told that you better tell your wife that she is not to listen to anybody, and you better see that you give me your wife. He said, all right, she'll be born in Lanka and you can marry her. And her name was Mandodari.
Now the great story goes on like that. But this Mandodari was the great worshipper of Vishnu. And at the time when Rama came, to kill him, all this was organized by Mandodari herself. Because she knew that if Sri Ram kills Ravana, he will get his liberation from these ideas about women. The way he was running after Sita and doing all these things, she actually wanted that something should happen, that he should take another birth and he should get rid of these notions of looking after beautiful women and the way he brought Sita ji there. She was against it completely, but he would not listen. So the war took place, and in the war he was killed by Shri Ram. All this episode came because of the unlimited compassion of Sri Shiva. His compassion is to look at, looks very illogical sometimes. But there's a big logic behind it. The logic is that whatever he does brings forth a kind of a solution of the problem. For example, there was a war on, and the war was going on, and that time there was a problem because there was one horrible devil who was given blessings by Sri Shiva that nobody can kill. He had given also blessings that they call Varadan to another saint who said, I want to sleep now and nobody should disturb me. So he was given a blessing, anybody who disturbs you in your sleep, you can just look at that person and he'll be reduced to ashes. So these two now. When the war started, you see, Sri Krishna thought best thing is to kill this devil with the same blessings that the saint has got. So he played, and he started running away from the battlefield, and that's why it's called as a warrior who has ran out of the field, Ranchordas, the one who runs away out of the field of battle. And when he was running, he was wearing a shawl, Sri Krishna. He just stealthily entered into the cave where this another saint was sleeping and put his shawl on top of that. So when he put the shawl on top of him, the the devil who was following him, this satanic fellow, he reached that place and saw the same shawl, and he said, oh, so now you are tired and now you are sleeping here, I'll put you right, without realizing who was sleeping. And he pulled the shawl, and here the sleeping saints get up and looks at him, and they say with his third eye he burnt. So the solution came in. So the whole play is like this, of three forces going on, just to show ultimately the truth prevails. First is the Shiva's compassion, his goodness, to one side. Then the play of Sri Krishna, or say Sri Vishnu, of neutralizing. And the third is the play of Brahma, who creates things and who produces things. All these three forces are playing.
just to create an atmosphere for all of us to feel that there is something else is to be done to our human awareness. All they have evolved within us this desire to seek the truth. Now on one side Shiva is extremely compassionate, very kind, even to asuras, the Rakshasas. But on the other side, he can be extremely cruel, he can destroy the whole universe. If the people are so decadent, if the people do not take to spirituality, if their innocence is completely lost, if they do not get detached from all these wrong identifications which are creating problems in this world, he destroys the whole universe. So as it is, he is the spectator of the work of Adishakti. He allows her to do all this work, to create human beings, to give them realization, do all this. But in case he finds her children, people who have been saved by her, are misbehaving, are insulting, or in any way destroying her work, he might get into a temper by which he can destroy the whole universe. But I don't think now there's any chance for him to do that, because we have now Sahajogis all over. But what I find among Sahajogis is this, that some of the Sahajogis grow very fast, steadily, strongly. They achieve their principle of Shivatata. The first achievement shows that from inside they start getting detached. Now detachment is not mental. It's not mental. It is not that we have to take to some sort of a sannyasa, or we have to go to Himalayas, give up our families and all that. But the detachment is within oneself. When that detachment starts working, the first sign is that we become joyous. We become happy. Now if you ask anyone, why are you unhappy? He'll talk about his wife, maybe his house, maybe his children, maybe his country, maybe society, whatever it is. So he gets absolutely upset or maybe very unhappy to see things happening around him. Now he is a realized soul. This unhappiness is not going to happen. What is needed is now to know that you can correct all these ills of the society, of the family, of the whole country by transforming others, not by feeling bad. But while doing that, the main thing that you should have is a complete detachment. I was amazed when I first started Sahaja Yoga, how people told me about their own countrymen, country fellows. I was amazed how they told me about their own religions, how wrong things they are doing. I didn't know so much as they told me. And I thought that this is a detachment that has come, that they can see clearly what's wrong. What's wrong with my society, with my people, with my relations, with my family, with my country, with the whole world. But it's only possible if you are not identified to any one of them. Otherwise, you will never see the defects. You will never see what's wrong with that person. You can never even see the chakras which are catching. So the first thing that should happen is detachment.
Now, how to achieve detachment is the point. Many people ask me, Mother, how do you get detached? Because I'm not attached, you see. So I'm already detached. I don't know how to do that way. But for you people, I would say, to understand yourself, you should introspect. Try to find out, to what thing am I attached? Why am I miserable? For whom am I worried? Why should I worry? Some things, you see, which were never very important, they become very important to certain surgeons. For example, I was told that in the West people don't care so much for their children. But as soon as they get realization, they just get attached to their children like as if with some glue. They cannot think what is good for their children. Everything about children they think is their primary duty. The other day I was surprised when they told me that it's the parents who want to come after the birthday puja. I was shocked. I mean, just on the way is birthday puja, and why should the parents want to come after that? When I told Yogi, he said, Mother will be very happy if they are here, and they should be. It will help the children, it will help the parents. But the whole now attention goes to the children, that we must leave the children there and we must look after them, and that's the only thing. So the attachment to children will definitely make you do such things which are not good for you. So this new attachment starts after Sahaja Yoga. I have seen, very common. Then another attachment is, say, to your family. Normally there are no such things in the West. People are not attached to their family much, you see, they drink, they do all kinds of things. Suddenly they become self-realized, and it's like a boomerang, they come back to the family. They're so attached to the family, attached to the house, attached to everything. I just can't understand. If you are becoming the pure spirit, then you are detached, because you are just a reflection. You are the reflection of God Almighty. So all these identifications drop out. Now, one may say how to drop it out. I have never dropped them, but still I can suggest certain things which confirm. First is meditation. You should discover about yourself what's wrong with you, which side is catching. Is it right or left side? With meditation you can find out. Are you attached to money? Are you attached to business? Are you attached to your family? Are you attached to your country in a way which is not such? Or to your culture which is not such? Then try to get rid of this attachment by meditation. You know how to get rid of the right and the left. This attachment will show on your fingertips, and you have to see for yourself what centers you are catching, in which way are you in trouble, and then you can clarify it very simply by taking a very simple search treatment. I think here we fail that once we get attached to something, we don't even think we are getting attached. We think we are doing very great thing because now we love this person, love that person. Shiva's qualities. The compassion part. You start getting attached to people. That is no compassion. That is no compassion of any kind. To be attached to any such things is no compassion in you. You cannot have compassion of Shiva. Though people think it is the Shiva's compassion that is working within us, not.
because that compassion is very pure. It is like, as I have told you many times, it's like the sap in the tree which rises and goes to various parts of the tree, and then either it evaporates or goes down into Mother Earth. It's not attached. If it gets attached to one flower or to one leaf or to one fruit, then the whole tree will suffer and also the flower will disappear. So, this kind of attachment to a particular thing, to a particular idea, is not proper. Inside yoga, I have found people are very adaptable and understand what they should do. But the main thing is meditation. In meditating on your heart, on the Shiva Tattva, on the principle of Shiva, you can definitely detach, and then the joy will be the maximum. Joy will be the maximum. I have seen people have interest in, say, food, or in clothes, or in house, anything. You can have interest. You should have interest. But in that interest, there should be enlightenment that you cannot get attached. Some people say, who are, say, from South India, they don't like North Indian food. Those who are from North India don't like South Indian. It's a big problem. I asked the people in Indian Airlines, why don't you have some standard food? He said, what is the standard food of India? Tell me. It was a question. Indians are very particular about the taste and food. So, it's a fact, we don't have any standard food in India. But in the same way we can say in so many other ways that in the West people run after things which are not necessary. They do things just out of fashion, or I don't know, because their personality is not grown up. If your personality is grown up, then you see everything from an angle which is much higher than others, and you don't get dissolved with others. What you know is much higher, much greater, and much more joy-giving. Now these attachments, people think that is very joy-giving. If you get a child, and if you have, say, a wife, everything are joy-giving. It's a very wrong idea. The joy comes from your own source of your spirit. Whether your husband is good, whether your children are good or bad, whatever they cannot give you joy. It's only you can enjoy yourself. And this is why one becomes very forgiving. When nobody can harm you, then whom are you going to be angry with? That is another great quality of Sadashiva, is that he is extremely forgiving. He goes up to a point till he destroys the whole work of Adishakti. But otherwise he is very, very forgiving. And he also is very balanced about it. Once the Adishakti got very angry with the whole world, was so decadent and all that, and she started destroying everything. So he put a little child under her feet, and such a big tongue came out with such a shock, she stopped her destruction. So his ways are such that a person who is to develop the Shiva principle within himself should be extremely forgiving. I know there are people who are very cruel, who are very torturesome. If you cannot bear it, all right, finish it off. I'll stand by you. जय श्री माता जी। ये स्पीच का पूरा लिंक ये मेडिटेशन के बाद भेजा जाएगा। वी विल सेंड अक्रॉस
this beautiful speech. There's 20 more minutes that is left. We will certainly share it after this meditation, so everyone can enjoy the whole speech. अभी थोड़ी देर के लिए हम ध्यान में रहेंगे. We'll continue to stay in meditation, observing top of the head and from there the center of both our palms. सर के ऊपर क्या हो रहा है महसूस करेंगे, वहां से दोनों हथेली को महसूस करेंगे और याद करेंगे जो माँ ने बताया. And we'll try to recollect what mother has told about Shiva Tattva, detachment and introspection. से कैसे डिटैचमेंट आएगा, हम अटैच कहाँ हो रहे हैं, वेयर आर वी गेटिंग अटैच, टू चिल्ड्रन, टू फैमिली, टू मनी, टू जॉब्स. क्या क्या अशुद्ध इच्छाएं आ गए हैं और उन सब से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं. और वो माँ जैसे बता रही है, इंट्रोस्पेक्शन से और ध्यान से. And this we can know by the catches that we feel in our chakras. और माँ ने बताया कि ये सब हम अपने लेफ्ट में, राइट में कैचेस से पता कर सकते हैं. क्या क्या कैचेस, क्या क्या अटैचमेंट है, what attachments we have. And as we meditate, we can slowly drop them out. क्योंकि ध्यान में ये अटैचमेंट्स कैचेस के माध्यम से पता चलता है. As Shimada is told, we start feeling these attachments in us as catches. So all of you, please light one candle behind your left Swadhisthana. एक कैंडल लेफ्ट स्वादिष्ठान के पीछे रख लेंगे. And here we will do our left clearance using introspection meditation. यहाँ हम मेडिटेशन करेंगे जो माँ के स्पीच के माध्यम से, इंट्रोस्पेक्शन मेडिटेशन, जिसमें मेडिटेट करेंगे इंट्रोस्पेक्शन में. So today is the day when we have to introspect. So should we go into meditation, all of us? Please close your eyes. All of you close your eyes. Now we all will do the meditation the way we have been doing in the halls wherever we had public programs. So the first you have to put your hand on your heart. We'll work on the left hand side and the left hand towards me. Now, first of all, you put your hand on your heart. In the heart resides Shiva, is the spirit. So, you have to thank your spirit that it has brought light to your attention. Because you are a saint, and the light that has come in your heart has to enlighten the whole world. So please, now in your heart, you pray that let this light of my love of the divine spread to the whole world. With all sincerity and understanding that you are connected with the divine and whatever you desire will happen. With full confidence in yourself.
Now put your right hand in the upper part of your abdomen on the left hand side, on the upper part of your stomach on the left hand side, and now here is the center of your dharma. Here you have to pray that let Vishwa Nirmal Dharma spread in the whole world. Let people see the light through our dharmic life, through our righteousness. Let people see them and accept the Vishwa Nirmal Dharma, by which they get enlightenment and a benevolent higher life and a desire to ascend. Now, take your right hand in the lower portion of your abdomen, of the stomach, on the left hand side. Press it. Now this is the center of pure knowledge. Here, you have to say as Sahajogis that our mother has given us the full idea how the divine works. She has given us all the mantras and all the pure knowledge that we could bear and understand. Let me fully be knowledgeable about that. All of us. I have seen if the man is a leader, the wife doesn't know a word about Sahaja Yoga. If the woman knows about Sahaja Yoga, the husband doesn't know anything about it. Let me be proficient and an expert in this knowledge. So that I can give realization to people, make them understand what is divine law, what is Kundalini, and what are the chakras. Let my attention be more on Sahaja Yoga than all these mundane things. Now put your right hand in the upper part of your abdomen. Close your eyes. Now here, on the left hand side, press it. Now here, Mother has given me the spirit and I have my own Guru, which is the spirit. I am master of my own. Let there be no abandonment. Let there be dignity in my character. Let there be generosity in my behavior. Let there be compassion and love for other Sahajogis. Let me not show off, but have a deep knowledge about God's love and His doings. So that when people come to me, I should be able to tell them about Sahaja Yoga and give them this great knowledge with humility and love. Now raise your right hand on your heart. Here you have to thank God that you have felt the ocean of joy and you have felt the ocean of forgiveness. And the capacity to forgive as our mother has, which we have seen is so tremendous. Let my heart expand and encompass the whole universe. And my love should resound the name of God. The heart every moment should express the beauty of God's love.
Take your now right hand in the Vishuddhi, that is on the left Vishuddhi, between the neck and the shoulder in the corner. I will not indulge into the falsehood of guilt, because I know it is falsehood. I will not escape my faults, but face them and eradicate them. I will not try to find faults with others, but in my own knowledge of Sahaja Yoga, let me remove their faults. We have so many ways secretly we can remove the faults of others. Let my collectivity become so great that the whole Sahaja Yoga race is my own family, my own children, my home, my everything. Let me get that feeling completely, innately built within myself, that I am a part and parcel of the whole, because we all have one mother. And let my concern go to the whole world to know what are their problems and how can, through my true desire, power, solve that. Let me feel the problems of the world in my heart and innately to remove all of them from the basis of which they are, from the basis from which they are generated. Let me go to the principles of all these problems and try to remove them through my Sahaja Yoga powers, through my saintly powers. Now put your right hand on your forehead across. Now here you have to say, first of all, I have to forgive all those who have not come in Sahaja Yoga. Those who are on the periphery, who come and go, who jump in and jump out. But first of all and foremost, I have to forgive all the Sahaja Yogis, because they are all better than me. I am the one who tries to find faults with them, but I am at the lowest ebb, and I have to forgive them, because I must know that I still have to go very further. I am still much less. I have to improve myself. This humility has to come within us. So you have to say here, let the humility in my heart, in a true sense, not hypocritical, work out this feeling of forgiveness, so that I bow to reality, to God, and to Sahaja Yoga. Now you have to put back your hand on the back side of your head and push back your head here, and you have to say here, Oh Mother, whatever wrong we have done to you so far, and whatever wrong goes in our minds, and whatever smallness we have shown to you, whatever way we have troubled you and challenged you, please forgive us. You have to ask for forgiveness. In your intelligence you should know what I am. I don't have to tell you again and again. Not at Sahasrara, you have to thank me. At Sahasrara, put your hand, move it 7 times and thank me 7 times. Mother, thank you very much for the realization. And Mother, thank you very much for making us understand how great we are. And thank you very much for bringing all the blessings of the divine. And thank you very much for raising us higher, much higher than from where we were. And also thank you very much for sustaining us and for helping us to improve ourselves and correct ourselves. And thank you very much ultimately that Mother, you have come on this earth, taken your birth and working so hard for us, for all of us. Press it hard and move it hard.
खाली बसा, खाली बसा, खाली बसा, खाली बसा, खाली बसा, खाली उतरा, खाली उतरायचं, खाली उतरा, खाली उतरा, खाली उतरा, गेट डाऊन, गेट डाऊन, गेट डाऊन, गेट डाऊन. Now take down your hands. Heads are all very hot. So now let us give ourselves a nice bandhan. In the bandhan of mother, let us move our left to the right. One, nicely. Understanding what you are, what are your auras. Now again, second one. Now the third one. Now the fourth one. Now the fifth. Now the sixth one. And now the seventh. Now raise your kundalini. Raise your kundalini. Slowly, very slowly. Raise it first time, you have to do it very slowly. Now push back your heads and give it a knot. One knot. Second one. Let's do it very slowly. And knowing what you are. You are a saint. Do it properly. Properly. Do it properly, not in a haste. Take it to your head. Push back your head and give it two knots there. One and two. Now let's do the other one. Again, the third one you have to give three knots. Very slowly do it. Very slowly. Now do it properly. Now push back your head. Now give it the third one. Three times. Now see your vibrations. See your vibrations like this. All the children, see your vibrations like this. Put your hands. Step down it. All right? Good. Beautiful. I'm getting vibrations from you. May God bless. जय श्री माता जी. जय श्री माता टू ऑल. अभी हम now we will off the candle that is on the behind on the left swadhisthana. left swadhisthana के पीछे जो कैंडल था वो बंद कर देंगे. अभी हम फुट सोक की तैयारी करेंगे. नाउ लेट्स क्लियर आवर राइट साइड. अभी लेफ्ट क्लियर कर लिया हमने, अभी राइट क्लियर करेंगे फुट सोक के माध्यम से. एक ही फुट सोक होगा? 2 फुट सोक होंगे. लेट्स अरेंज फॉर फुट सोक. एक 2 मिनट में फुट सोक शुरू हो जाएगा. विल स्टार्ट फुट सोक इन अ मिनट. ये इंट्रोस्पेक्शन मेडिटेशन के बाद फर्क आया? वर यू एबल टू नोटिस चेंजेस आफ्टर द इंट्रोस्पेक्शन मेडिटेशन? Srimati, it helped to get attention inside and calm down. वेरी गुड, वेरी गुड. जय श्री माता जी. भैया जय श्री. सहस्त्रार तो पूरा ठंडा हो गया है, लेकिन बॉडी में जो सेंट्रल हार्ट का पीठ के साइड में जो जगह है वहां से जैसे बहुत कुछ निकल रहा है. जय श्री माता जी. थैंक यू दीदी. या ये आज पूरा डिटैचमेंट का है. शिव तत्व में मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज है डिटैचमेंट. और
अपना जो अशुद्ध इच्छाएं है, जो लेफ्ट स्वादिष्ठाना है, इसलिए वो कैंडल रखना था और इंट्रोस्पेक्शन मेडिटेशन करना था, तो वो निकलना है। तो द रीजन दैट वी हैड डन दैट वाज डूइंग इंट्रोस्पेक्शन मेडिटेशन विद कैंडल ऑन द लेफ्ट स्वादिष्ठाना टू रिमूव जो भी अटैचमेंट्स है वो निकालने के लिए। ये एक प्रयास था निकालने के लिए। अभी देखते हैं, अभी फुटसोक में भी देखते हैं। लेट्स सी एनी अटैचमेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड, वी विल रिमूव फ्रॉम फुटसोक। राइट हैंड साइड अटैचमेंट्स आर लाइक एम्बिशंस, जो प्लानिंग करते हैं हम लोग, ये करते हैं वो करते हैं, वो सब राइट साइड के हैं। वो भी देखते हैं अभी। चलिए फुटसोक अरेंज करते हैं। लेट्स अरेंज फुटसोक। चलिए 2 मुट्ठी भर नमक, लेट्स पुट 2 fistful of salt। पानी को बंधन देंगे, विल गिव बंधन टू दिस वाटर। ओम त्वमेव साक्षात् श्री समुद्र देवता, साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी, प्लीज रिमूव all the imbalances. Mata ji, please make this water like sea water and make sea water remove all the imbalances in our chakras and nadis. ये दोनों पैर पानी में बिल्कुल बहुत, और फिर वाटर। राइट हैंड श्री माता जी को और लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। राइट हैंड टुवर्ड्स माता जी, लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स स्काई। आंखें खुले रहेंगे, आईज विल रिमेन ओपन। In patience, silence and witness, we'll keep looking at Shri Mataji's bindi और श्री माता जी के चरण। सबूरी में शांति के साथ, निषिद्धता में, साक्षी भाव से हम श्री माता जी के चरण देखते रहेंगे या श्री माता जी की बिंदी।
महसूस करते रहेंगे राइट हैंड की कितनी उंगली में ठंडी हवा आ रही है और लेफ्ट हैंड से आकाश में जा रहा है. We'll continue to observe how many fingers of the right palm are we absorbing cool air and if we are ventilating through our left palm. So all clearances start with निर्विचारिता. सभी क्लियरेंसेस सिर्फ निर्विचारिता के बाद ही शुरू होती है. तो पहला हमको देखना है कि हम निर्विचार है कि नहीं, और माँ की बिंदी देख रहे हैं या माँ के चरण देख रहे हैं कि नहीं. फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू नोट इज आर वी इन थॉटलेस अवेयरनेस.
Are we looking at Shri Mataji's bindi or Shri Mataji's lotus feet? And when we are observing, are we able to feel vibrations in the right palm, left palm? If we are getting thoughts, are we getting from the past or are we getting from the future? Are we able to witness? Because as we witness, Shri Mataji will start working on us. जैसे हम अपने आप को साक्षी भाव से देखते रहेंगे, माँ कार्यान्वित हो जाती है। अपने आप को देखना यानी हम देख रहे कि हम माँ की बिंदी देख रहे कि नहीं, और हम वहां ऊपर से ही देखेंगे कि हमको विचार आ रहे कि नहीं। अगर विचार आ रहे हैं वो भूतकाल के है कि ये भविष्य काल के है, और राइट हैंड में लेफ्ट हैंड में हवा आ रही कि नहीं। फिर ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ओवर हेड, we are observing and we are looking at Shri Mataji's lotus feet or Shri Mataji's bindi. We from top of the head again will observe if you're getting thoughts. And if you're getting thoughts, they're coming from the past or from the future. We observe. And we also observe if you're getting vibrations in the right palm, left palm. But as we witness, Shri Mataji takes over. क्योंकि जैसे हम साक्षी भाव में आते हैं तो हम आत्म तत्व में उतरते हैं। जैसे हम आत्म तत्व में उतरते हैं तो परमात्मा पूरा संभाल लेते हैं। अपना बल है साक्षी भाव से देखना, और strength is our attention, our strength is our witnessing capacity. चलिए ईगो सुपर ईगो ड्रॉप करते हैं। विल ड्रॉप और ईगो एंड सुपर ईगो। राइट हैंड ऑन द ईगो, लेफ्ट हैंड ऑन द सुपर ईगो। along ida pingla pull the heat and throw it into water. राइट हैंड ईगो पर, लेफ्ट हैंड सुपर ईगो पर, कंडीशनिंग पर, और ईड़ा पिंगला से होते हुए गर्मी को निकाल के पानी में फेंक दीजिए 7 बार, 7 टाइम्स। अभी अपने कंधों से, शोल्डर्स, पुल फ्रॉम द शोल्डर्स 7 टाइम्स। श्री चक्र, ललित चक्र से गर्मी निकाल के पानी में फेंक। सेम, अभी दोनों हाथ स्वादिष्ठान पर रखिए पीछे, और पैरों के तले गर्मी निकाल के पानी में फेंक दीजिए। पुट हैंड्स ऑन द स्वादिष्ठान along your legs, throw the heat and throw it in the water 7 times. अभी पैर धो लीजिए एंड दूसरा फुट सोक टब रेडी करिए। लेट्स वॉश योर फीट एंड गेट अनदर फुट सोक टब रेडी इन 2 मिनट्स, 2 मिनट में। पानी को बंधन देके फेंक दी। यू बंधन टू दिस वाटर एंड थ्रो इट ऑफ द कमोड।
वज्र हनुमान मारुति वना अगर आ गए हैं तो 2 मुट्ठी भर नमक, लेट्स पुट 2 fistful of salt. पानी को बंधन। ओम त्वमेव साक्षात् श्री समुद्र देवता, साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः. Shri Mataji, please make this water like sea water and make this sea water remove all the imbalances in our chakras and nadis. दोनों पैर पानी में. We'll put both our feet in the water. Right hand Shri Mataji or left hand Akash ki or. Right hand towards Shri Mataji, left hand towards the sky. And here we will listen and sing. यहाँ हम सुनेंगे और गाएंगे भी मारुति स्तोत्र, जो श्री हनुमान जी के प्रेज में है. In the praise of Shri Hanumana. भीमरूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुति वनारी अंजनी सूता रामदूता प्रभंजना महाबली प्राणदाता सकळा उठवी बळे सौख्यकारी दुःखहारी धूर्त वैष्णव गायका दीननाथा हरिरूपा सुंदरा जगदंतरा पाताल देवता हंता भव्य सिंधूरलेपना लोकनाथा जगन्नाथा प्राणनाथा पुरातना पुण्यवंता पुण्यशीला पावना परितोषका ध्वजाग्रे उचली बाहो आवेशे लोटला पुढे काळाग्नी काळ रुद्राग्नी देखता कापती भये ब्रह्मांडे मायली नेणू आवळे दंतपंगती नेत्राग्नी चालिल्या ज्वाळा भ्रुकुटी ताटिल्या वळे पुच्छते मुरडिले माथा किरीटी कुंडले बरी सुवर्णकटिका सोटी घंटा किणकिणी नागरा ठकारे पर्वताईसा नेटका सडपातळू चपळांग पाहता मोठे महाविद्युल्लते परी कोटीच्या कोटी उड्डाणे झेपावे उत्तरेकडे मंत्रांद्री सारिका द्रोणू क्रोधे उत्पाटिला बळे आणिला मागुती नेला आला गेला मनोगती मनासी टाकले मागे गतीसी तुलना नसे आणुपासून ब्रह्मांडा एवढा होत जातसे तयासी तुलना कोठे मेरू मांदार धापुटे ब्रह्मांडा भोवते वेढे वज्रपुच्छे करू शके तयासी तुलना कैची ब्रह्मांडी पाहता नसे आरक्त देखिले डोळा ग्रासिले सूर्यमंडळा वाढता वाढता वाढे भेदिले शून्य मंडळा धनधान्य पशुवृद्धी पुत्रपौत्र समग्रही पावती रूप विद्यार्थी स्तोत्रपाठे करोनिया भूतप्रेत संबंधाधी रोगव्याधी समस्तही नाशती तुटती चिंता आनंदे भीमदर्शने हे धरा 15 श्लोकी लाभली शोभली बरी दृढदेहो निसंदेहो संख्या चंद्रकळा गुणे रामदासी अग्रगण्यू कपिकुळासी मंडणू रामरूपी अंतरात्मा दर्शने दोषनासती इति श्री रामदासकृतं संकटनिरसनं मारुतिस्तोत्रम्
सम्पूर्णम् साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी महसूस करेंगे पहला फुट स्ट्रोक से दूसरा फुट स्ट्रोक में फर्क आ रहा है कि नहीं. लेट्स ऑब्जर्व द चेंजेस आफ्टर we start doing the second foot stroke. Are we feeling better vibrations in our right palm and left palm? महसूस करेंगे राइट में लेफ्ट में थोड़ा बेहतर बदलाव आ रहा है कि नहीं. Let's open very nicely as I start feeling coolness in the right palm and left palm, and the salt has also melted mostly. How is it for you? आप लोगों को कैसा पता चल रहा है दूसरा फुट स्ट्रोक में? जय श्री माता जी भैया। रेशमा दीदी. जी भैया, दोनों हाथ में और सहस्त्रार से निकल रहा है, वो पता चल रहा है। और नमक जी नमक गल गया भैया। गल गया. हाँ. जी। जय श्री माता जी। रेशमा दीदी. और हमने देखा कि नमक तभी गलता है जब हम निर्विचार होते हैं, जब क्लियरेंस होता है. We noted that the salt mixes very well when we are thoughtless and clearance is happening nicely. बाकी लोग भी बोलिए फर्क आ रहा है. Others also please let me know if you are able to notice the changes in the second foot soap. रेशमा दीदी. रेशमा माता जी भैया अभी ठीक है, अच्छा लग रहा है भैया, बस थोड़ा सा लीवर के ऊपर हाँ. भारीपन सा है और राइट पाम पे भी। राइट पाम में भी. ओके हाँ ओके जी वेरी हाँ। गुड. जय श्री माता जी भैया, दोनों हाथ में वाइब्रेशन आ रही है। ओके ओके. और सर. यस। ओके गुड. अभी कैंडलिंग में फुट सोप में भी सहस्त्रार अच्छा मालूम पड़ रहा है विराट में. ठीक है चलिए दोनों पैर धो लेते हैं. लेट्स वॉश और फीट.
पानी को बंधन देंगे, विल गिव बंधन टू दिस वाटर। कुंडली उठा के बंधन लेंगे, विल रेज और कुंडली टेक बंधन। जय माता दी। अभी 10 मिनट का ब्रेक होगा, देयर विल बी अ 10 मिनट्स ब्रेक नाउ, एंड आफ्टर 10 मिनट्स वी विल हैव एट 7:05, 7:05 को शू बीट होगा, जिसमें आपको दोनों शूज चाहिए या दोनों चप्पल। यू हैव टू गेट 2 शूज और 2 चप्पल दैट यू यूज फॉर शू बीट। प्लीज भी आइए, तब तक मैं यहाँ हूँ। अगर किसी को एक्सपीरियंस शेयर करना है, क्वेश्चंस है, सजेशंस है, मैं यहाँ हूँ। आई एम हियर टू लिसन इन केस यू हैव suggestions or experiences to share और हेलो क्वेश्चंस को जी, आते। जय श्री माता जी भैया। जयश्मा दीदी। भैया फील तो बहुत अच्छे से हो रहा है, लेकिन क्या है कि मुझे कुछ ना 1 ईयर से ऐसा है कि आंखें बंद करके ध्यान करती हूँ या कुछ भी होता है, मुझे ना स्नैक दिखते हैं चारों तरफ। जैसे आज भी मैंने लेफ्ट साइड से, मुझे ऐसा लग रहा था कि स्नैक दिख रहे हैं पूरे, सांप जैसे यार। सांप सांप। हाँ जी, सांप। और मतलब ध्यान भी करती थी पहले, शुरू शुरू में मुझे नहीं होता था, फिर अचानक से स्नैक स्नैक चारों तरफ पूरे स्नैक ही दिखते हैं। और ओके। बहुत परेशान हूँ मैं, मुझे स्नैक क्यों दिखते हैं। और ठीक आज है। फर्स्ट लेफ्ट साइड से किया तो पहले मुझे स्नैक दिखा, उसके हाँ। बाद फिर राइट साइड से जब मैंने सेकंड टाइम किया तो श्री माता जी के पूरे चरण दिखते हुए, जैसे साड़ी में आ रही है ऐसा दिख। ओके। आपके आप कब से विराट में हो? मुझे 6, अभी मुझे 2-3 डेज हुए हैं, लेकिन 6 ईयर से मैं कर रही हूँ सहज। सहयोग कर रहे हो, ठीक है। 2-3 दिन से अभी विराट में आए हो ना? ठीक है, जी नो जी प्रॉब्लम। अब जी विराट में सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे, रोज मंडे टू फ्राइडे क्लियरेंस होता है, रोज अटेंड करिए। जी। ठीक है। और जी, और और एक एक इंसिडेंट ये भी हुआ था कि जब मुझे मतलब लास्ट 2 ईयर की प्रॉब्लम है, मुझे ऐसे स्नैक दिखे थे। और सडनली जब मैं घर गई अपने, मतलब बाहर जॉब थी मेरी, जब मैं घर पे गई तो रियल लाइफ में स्नैक निकले मेरे घर से। ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखिए, आपका अटेंशन इम्पोर्टेंट है। आप जी अटेंशन कहाँ रख रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, मगर पहले आप ब्रह्मरंध्र अच्छी तरह खोल लीजिए। विराट जी में हर घंटे में एक बार सेशन होता है। ठीक है, जी 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। जी जी देर एवरी आवर 15 मिनट जी का सेशन आता है उसका। उसमें वही काम है कि ब्रह्मरंध्र खोलना और जी साक्षी भाव प्रैक्टिस करना। जी ठीक है, हम जब तक साक्षी नहीं बनेंगे, ये जी हम लिपटे रहेंगे अपने पुराने विचार, पुराने आदतें में, वो जी प्रॉब्लम रहेगा। तो साक्षी भाव प्रैक्टिस करिए, हर घंटे में एक बार होता है। तो हर घंटे आप प्रैक्टिस करोगे, या खुद करोगे या विराट के साथ करोगे, तो आपको 1 हफ्ते में ब्रह्मरंध्र बहुत अच्छा खुल जाएगा। ठीक जी है। जी जी और वो प्रैक्टिस करिए। जब जी अभी तो 2-3 दिन हुए ना, करिए, रोज हाँ, करिए। आप मेरे को जी बताइए 1 महीने जी के बाद फर्क क्या है। जी जी ठीक है, अभी पहली बार जो शूबिट करने जा रहे हैं, ये देखिए, यहाँ शूबिट के लिए आ, दोनों चप्पल चाहिए। और वो दोनों चप्पल क्यों चाहिए? क्योंकि ये स्पीच है, शिमाजी की स्पीच है। शूबिट प्रोसीजर जिसमें लिखा है 1990 1103 डिपार्चर ऑफ कुआलालंपुर मलेशिया। ओके, मलेशिया में स्पीच में माँ ने बोला दोनों चप्पल चाहिए, एक लेफ्ट चप्पल दूसरों को शूबिट करने के लिए, राइट चप्पल अपने को शूबिट करने के लिए। ठीक है, और ये दिन रात कभी भी कर सकते हो आप शूबिट। और ये शू इम्पोर्टेंट ये है कि ये चप्पल एक बार शू बीट इस्तेमाल करने के बाद आपको पहनिए मत फिर से। कि माता ने बताया ये स्पीच में कि एक बार आपने यूज कर दिया, फिर बाद में उसको पहनिए मत, सिर्फ शू बीट के लिए इस्तेमाल करिए। जैसे फुटसोक का अगर हमने शुरू कर दिया इस्तेमाल करने के लिए शू बीट, फुटसोक के लिए, तो फिर बाद में हम किसी और चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करते ना, वैसे ही एक बार चप्पल को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया शू बीट के लिए, वो पहनिए मत, सिर्फ शू बीट के लिए इस्तेमाल करिए। जय श्री माता जी भैया। जयश्मा दीदी। हम विराट से काफी दिन से जुड़ रहे हैं, लेकिन हम यूट्यूब के माध्यम से जुड़ रहे हैं ओके। और ग्रुप में भी हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे डालते हैं ना, तो कभी सामने आता है
विटनेस कभी नहीं आ पाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो आपने प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। राइट हैंड ऊपर रखिए, हाँ, हाँ, सर के नहीं ऊपर। नहीं, जैसे निकाल रहे हैं ना यूट्यूब में भैया, हाँ तो कभी निकलता है कभी नहीं निकलता है, हाँ हाँ पुराना हाँ, निकलने लगता है। विटनेस सेशंस, हाँ, विटनेस सेशन जब 100 से ज्यादा होते हैं ना, तभी यूजुअली ज्यादा लोग होंगे, तभी तो यूट्यूब में जाने की जरूरत है। वैसे तो जूम ही चलता है हमारा। करेक्ट। अच्छा, वही देखते हैं, कभी जूम में नहीं जुड़ता है। जैसे नहीं, अभी आप ये सेशन देते हैं ना, क्लियर सेशन भी, तो हाँ, हम सोचते हैं कि आपसे कुछ पूछें, कैसे पूछें, क्योंकि वो जूम में जुड़ता ही नहीं है, फिर यूट्यूब से जोड़ना पड़ता है मेरे को। करेक्ट। जो क्लियरेंस सेशंस है, मेडिटेशन हाँ सेशंस है, हाँ। उसमें आपको 300 400 500 लोग जुड़ते हैं। ठीक है, अच्छा तो इसलिए हमको यूट्यूब चलाना पड़ता है क्लियरेंस सेशंस और मेडिटेशन सेशंस में। मगर विटनेस सेशंस क्या होते हैं, हाँ छोटे हैं, हाँ 15 मिनट के हाँ। होते हैं। तो उसमें ठीक है। 100 से ज्यादा, हाँ, 100 से ज्यादा जब होते हैं तभी हम यूट्यूब खोलते हैं, नहीं तो यूट्यूब खोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, तो जैसे मेरा ये कहने का मतलब है ना, यूट्यूब में हमको खोजना पड़ता है, जैसे आप ग्रुप में कोई एक लिंक नहीं है, उसी लिंक से जुड़ जाए आदमी हर बार। करेक्ट, वही लिंक है, एक ही लिंक है। तो उसको एक बार ग्रुप में लिंक डाल दीजिए तो डायरेक्ट ग्रुप से जुड़ जाएंगे, अगर जोड़ेंगे तो। नहीं, नहीं, आप ग्रुप में है कि नहीं है है, व्हाट्सएप में? ग्रुप में है, हम सहस्त्र ग्रुप ठीक में, है, अगर विराट व्हाट्सएप में। में है तो हर दिन सुबह हाँ को हाँ। लिंक्स, जूम का लिंक, यूट्यूब लिंक आ जाता है, और वही एक ही है लिंक, सेम। अच्छा, आता और है क्या जो हाँ, उसमें लिंक? हाँ, पीडीएफ में आता है, एक पीडीएफ अच्छा, फाइल है, ग्रुप उसमें में। आता है, ग्रुप में अच्छा आता है, हर दिन आता है, हर दिन अच्छा आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, क्योंकि वो मैं वैसे आता है प्रोफाइल में, तुमको समझ में नहीं आ रहा था इसलिए हम पूछे। ठीक है, हाँ, वो पीडीएफ ओपन कर लीजिए, उसमें समझ और में आ जाएगा। विटनेस सेशन से मेरे को भी कभी तो ठंडा आता है, फीलिंग वाइब्रेशन आते हैं, कभी नहीं आते हैं। ओके, आ जाएगा, हर हर घंटे एक बार करिए, एक हफ्ते में पूरा खुल जाएगा। अच्छा, ठीक है भैया। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। संडे को भी आता है क्या हर घंटे? हाँ, संडे को भी हर घंटे। ठीक है भैया। ठीक। जय श्री माता। और स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये है कि बंधन चाहिए। तो 99% मैंने ये देखा कि बंधन उन लोग को चाहिए जो रेगुलर क्लियरेंस नहीं कर रहे हैं, है ना, उनका उनका प्रॉब्लम होता है। तो अगर हम रोज रेगुलर क्लियरेंस करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए सब से निवेदन है कि आप लोग रेगुलर क्लियरेंस करिए, 7 बजे सुबह, 7 बजे शाम को। आप खुद करोगे तो बस मेरे ख्याल से सपोज 1 टाइम हो रहा है, तो मगर कलेक्टिव में करेंगे तो 10 गुना ज्यादा फर्क आता है आपको। तो प्लीज डू इट कलेक्टिवली एंड इट इज फास्टर। दोनों चप्पल ले आइए, अभी पद्मा दीदी आ गई होगी। गेट बोथ चप्पल्स। जय श्री माता जी भैया। रेशमा दीदी। भैया मतलब कभी कभार सेशन हम अटेंड कर नहीं पाते हैं, तो बच्चों को भेजना पड़ता है, तो 7 बजे तो यही लिंक हम तुरंत फिर दूसरे टाइम में लगा लेते हैं, तो उसी से फर्क पड़ता है ना? या करेक्ट। जी जी भैया, थैंक यू। जय श्री माता जी। भैया एक चीज पूछना था, हाँ, कल आप बोलिए। बताए थे पानी वाला, जैसे कि श्री माता जी के सामने पानी रखिए रात भर। या हेलो। या बोलिए, हाँ, करेक्ट। हाँ, रात को आप पूरा पानी रख दीजिए, जैसे शरीर में पेन रहता है तो, फिर उसमें सुबह शहद, नमक और नींबू गार के पीने को। उससे पहले थोड़ा गुनगुना करना है पानी को।
हाँ, हल्का सा गुनगुना करके। लेकिन एक चीज पूछना था, पानी को पूरा खोल के रखना है, मतलब उसका ढक्कन हटा के? थोड़ा थोड़ा सा, करेक्ट, थोड़ा। क्योंकि हम लगता है ना कुछ गिर नहीं जाए रात को। हाँ नहीं, थोड़ा सा खोला रखिए उसे। थोड़ा सा। हाँ। अच्छा, वही पूछना था मेरे को। हम रात को आज खोले थे, लेकिन हम पूरा खोल के रखे। हम बोले भैया से पूछेंगे ये चीज। कल तो मेरा जुड़ा नहीं था ना जूम में, यूट्यूब से जुड़े हुए थे हम कल आज, इसलिए हम बोले आज पूछते हैं भैया बिल्कुल। से। कॉटन की रुमाल भी रख सकते हैं, पतली। उसके ऊपर क्या? हाँ जी। मतलब बॉटल जो कांच की रख रहे हैं उसके ऊपर कॉटन का रुमाल रख दें, ढक दें? अरे पानी को ढकना है कॉटन की रुमाल से, ताकि कॉटन से इजीली वहां की वाइब्रेशन जा सके। वैसे भी ओके। साल भर हम लोग वैसे ही रखते हैं। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। चलिए, दीदी आ गई है। हाँ, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ फिलहाल। आई एम म्यूटिंग ऑल सो दैट वी कैन कंटिन्यू विथ आवर शुभित सेशन। जेष्मा दीदी, ओवर टू यू। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी, सबको जय श्री माता जी। जय श्री माता जी टू ऑल। Let us take both hand towards sky, keeping attention on Sahasrara. Let us observe all the 10 fingers. हम दोनों हाथ आकाश देवता की तरफ देखेंगे, आकाश देवता को देखेंगे, चित्त सहस्रार में हाथों को महसूस करेंगे। साथ ही साथ हम मन ही मन आकाश देवता से प्रार्थना करेंगे, हे आकाश देवता, कृपा कर हमें आपके आशीर्वाद दीजिए, सहायता कीजिए। आपके बिना विराट तक पहुंचना मुमकिन नहीं है, कृपा कर हमें सहायता कीजिए। लेट अस प्रेज आकाश देवता। ओ आकाश देवता, प्लीज हेल्प अस एंड ब्लेस अस विद आकाश तत्व, sky element. It is not possible to reach Virata without your help. Please help us. हर एक प्रार्थना के बाद चैतन्य में जो बदलाव आता है उसको हम महसूस करेंगे। सहयोग चैतन्य की भाषा है। प्रार्थना मन ही मन कर सकते हैं, मगर चैतन्य हम हाथों में महसूस करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। Let us observe the changes in the vibrations after each and every prayer. Let us make the habit to observe the vibrations after each and every prayer. The language of Surge Yoga is the vibrations. So let us be perfect. Make the habit. अब हम अल्लाह अकबर बोलेंगे। अल्लाह अकबर खड़े होके बोलना अच्छा रहता है। कुशिद की उंगलियों को कानों में डालेंगे, चित्त सहस्रार में रहेगा, आंख खुला रहेगा, पूरा गर्दन को सीधा करेंगे। अल्लाह बोलते समय पूरा मुंह को खोलेंगे हम। आवाज बड़ी निकालने की जरूरत नहीं है। हम 16 बार अल्लाह अकबर बोलेंगे। इट इज बेटर इफ वी chant Allah Akbar in standing mode. Let us lift our throat fully. When we chant Allah, let us open our mouth fully. It is not necessary to say loudly. Keeping attention on Sahasrara with open eyes. Let us chant Allah Akbar 16 times. हम शुरू करेंगे Allah Akbar 16 बार। Allah Akbar. 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 Allah Akbar.
Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हम अब बैठ सकते हैं, दोनों हाथ आकाश की तरफ। हम गले को, विशुद्धि को और हाथों की उंगलियों को महसूस करेंगे जो बदलाव आया है। नाउ वी कैन सिट। लेट अस take both hand towards sky and observe the physical Vishuddhi and all the fingers. We feel, are we feeling any changes? अल्लाह अकबर ज्यादा बार भी बोल सकते हैं। विशुद्धि में ठंडा आने तक हम अल्लाह अकबर बोल सकते हैं, मगर 16 बार हमको कम से कम बोलना है। वी कैन चैंट अल्लाह अकबर more times also till we feel cool in our physical Vishuddhi. दोनों हाथों को जोड़ के आकाश देवता को प्रणाम करेंगे। थैंक यू आकाश देवता, थैंक यू वेरी मच। अब हम दोनों हाथ सूर्य देवता की तरफ लेंगे। Let us take both hand towards Surya Devata. Let us look at Surya Devata, sun. If there is no sun, let us face towards east. अगर सूर्य देवता दिख नहीं रहे तो हम पूरब की दिशा में चेहरा करेंगे। दोनों हाथ पूरब की दिशा में या सूर्य देवता की तरफ। सूर्य देवता को हम देखेंगे आंखों के पलके झपके बिना, विदाउट ब्लिंकिंग आइज। लेट अस लुक एट सन इफ देयर इज सन। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सूर्य देवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी आप ही साक्षात श्री सूर्य देवता हो, कृपा कर हमें श्री सूर्य देवता की समस्त गुण और शक्तियां प्रदान करने की कृपा कीजिए। इस धरती में, संसार में सूर्य देवता के बिना जीवित रहना मुश्किल है। श्री माता जी कृपा कर हमें श्री सूर्य देवता की निरंतरता, निरहंकार, ज्ञान, कार्य शक्ति प्रदान करने की कृपा कीजिए। कृपा कर हमारे पिंगला नाड़ी में श्री हिरण्य गर्भिणी शक्ति स्थापित करने की कृपा कीजिए। हमारी इड़ा नाड़ी को और बैकाज्ञा को संतुलन प्रदान करने की, शुद्धता प्रदान करने की कृपा कीजिए। श्री माता जी प्लीज bless us with all the qualities and powers and knowledge of Sri Surya Devata. All the living beings on this earth because of Sri Surya Devata Sri Mataji. Sri Mataji, the egolessness, nirahankaratva, nirantarata, continuity in working without any tiredness, and the knowledge, no differentiation. Please bless all the qualities. Sri Mataji, please establish Sri Hiranyagarbhini Shakti in our Pingala Nadi. Sri Mataji, please cleanse our Ida Nadi and back Kajna and please nourish it.
अब हम चैतन्य को महसूस करेंगे और चित्त को सुषुम्ना नाड़ी में लेके जाते हुए गायत्री मंत्र बोलेंगे. Now let us chant Gayatri Mantra, taking our attention in Sushumna while chanting Gayatri Mantra, related chakras, observing the vibrations, looking at sun. सूर्य देवता को देखते हुए हम कहेंगे ओम भू मूलाधार, ओम भुवः स्वादिष्ठान, ओम स्वः नाभि, ओम महः अनाहत, ओम जनः विशुद्धि, ओम तपः आज्ञा. अब हम ब्रह्मरंध्र से बाहर आएंगे. नाउ लेट अस कम आउट ऑफ ब्रह्मरंध्र. ओम सत्यम सहस्रार, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. सहस्रार से थोड़ा ऊपर उठाएंगे चित्त को. लेट अस लिफ्ट आवर अटेंशन लिटिल हाई अबव सहस्रार. ओमापो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो. आकाश की तरफ चित्त को छोड़ देंगे. लेट अस लीव आवर अटेंशन टुवर्ड्स स्काई. लेट अस सी दैट मदर कुंडलिनी इज आल्सो मूविंग along with our attention towards sky. हमारे चित्त के साथ साथ कुंडलिनी माँ भी ऊपर में बह रही है, जा रही है. हम इसको महसूस करेंगे. इसी तरह और अब 2 बार कहेंगे. 2 more times. Let us chant likewise. ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओमापो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो. ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओमापो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो. कुंडलिनी माँ को महसूस करेंगे. लेट अस ऑब्जर्व मदर कुंडलिनी. मूवमेंट, enhanced fast speed, enhanced width. सूर्य देवता को प्रणाम करेंगे. लेट अस डू प्रणाम टू सूर्य देवता एंड टेक टर्न. मूड लेंगे पीछे, बैक आज्ञा सूर्य देवता की तरफ, बैक आज्ञा टुवर्ड्स सन, लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स स्काई, राइट हैंड ऑन बैक आज्ञा, कीपिंग अटेंशन ऑन सहस्रार, ऑब्जर्विंग बैक आज्ञा. लेट अस लिफ्ट आवर फेस विद ओपन आईज. लेट अस लुक एट आकाश देवता. अब हम बाएं हाथ आकाश की तरफ लेंगे, दाएं हाथ बैक आज्ञा में रखेंगे. चित्त को सहस्रार से हम बैक आज्ञा में देखेंगे. सहस्रार में रहते हुए बैक आज्ञा को देखेंगे. गले को पूरा सीधा करेंगे, चेहरा आकाश की तरफ, आंख खुला रहेगा. बैक आज्ञा में अटेंशन रखते हुए बताएं. हम महागणेश की मंत्र बोलेंगे. बैक आज्ञा की मंत्र. ओम त्वमेव साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री महाभैरव साक्षात् श्री हिरण्यगर्भा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः.
श्री माता जी कृपा कर हमारे बैकाज्ञा में आई। श्री माता जी प्लीज कम इन अवर बैकाज्ञा, लेट अस वेट एंड वॉच। हम इंतजार करेंगे कुंडली माँ का बैकाज्ञा में पहुंचने की, फील करेंगे। श्री माता जी मुझसे, मेरे परिवार से, मेरे पितरों से, मातृकुल के पितरों, पितृकुल के पितरों से, ससुराल के तरफ के पितरों से, जाने अनजाने में आदि शक्ति के विरुद्ध में, सत्य के विरुद्ध में कोई भूल हो गई हो श्री माता जी, कृपा कर हम सबको क्षमा कीजिए। श्री माता जी कृपा कर हम सबको क्षमा कीजिए और आत्मोन्नति प्रदान करने की कृपा कीजिए। श्री माता जी हमारे पितरों को क्षमा करके उनको आत्मोन्नति प्रदान करने की कृपा कीजिए और उनके प्रभाव को हमारे सूक्ष्म तंत्र से दूर करने की कृपा कीजिए श्री माता जी। श्री माता जी, if any mistakes done by me, my family and my ancestors, parents side and in-laws side, knowingly or unknowingly, against the truth, against Adi Shakti, please forgive all of us. Shri Mataji, please forgive all of us and bless us with the present. Shri Mataji, please forgive our ancestors and bless them with ascent and remove their effects from our subtle system. बैकाज्ञा को महसूस करेंगे ठंडा होते हुए। Let us feel बैकाज्ञा, it is getting cool. Now, keeping attention on बैकाज्ञा, let us take right hand towards Mother Earth and now let us look at Mother Earth. अब हम चित्त को बैकाज्ञा में छोड़ देंगे और राइट हैंड को धरती माता की तरफ, नजर धरती माता की तरफ, सहस्रार से बैकाज्ञा को महसूस करेंगे। अब हम दोनों हाथ आकाश की तरफ लेंगे, अटेंशन बैकाज्ञा, सहस्रार और आकाश देवता की तरफ रखेंगे। लेट अस टेक बोथ हैंड टुवर्ड्स के, लेट अस कीप आवर अटेंशन बैकाज्ञा, सहस्रारा एंड टुवर्ड्स आकाश देवता। श्री माता जी आप ही साक्षात श्री आकाश देवता हो, कृपा कर हमारे माध्यम से बहने वाले परम चैतन्य को स्वीकार कीजिए और पूर्ण विश्व में, पूर्ण परिसर में फैलाने की कृपा कीजिए श्री माता जी। श्री माता जी और साक्षात श्री आकाश देवता, please receive the vibrations flowing through us and please spread it all over the area and all over the world.
अब सहस्रार से हमारे चित्त ऊपर आकाश की तरफ है, कुंडली माँ भी ऊपर बह रही है। अब बैकाग्नि से कुंडली ऊपर जा रही है, हमको ऐसे महसूस हो रहा है क्या? देखेंगे। 10 उंगलियों को महसूस करेंगे। लेट अस ऑब्जर्व ऑल द 10 फिंगर्स। हर एक उंगली के पोर को एक बार हम अटेंशन डालेंगे। Let us put our attention on all the 10 fingers, tip of the all 10 fingers once, a glance. जो बंद है वो ओपन हो जाएगा। दोनों हाथों के मूलाधार को देखेंगे। लेट अस ऑब्जर्व ऑल मूलाधार ऑफ बोथ द palms. नाभि, स्वादिष्टान, अनाहता, विशुद्धि, आज्ञा,
सहस्रार। दस उंगलियों को और सहस्रार को महसूस करेंगे। लेट अस ऑब्जर्व ऑल द 10 फिंगर्स इन सहस्रार फॉर ए मिनट। थैंक यू आकाश देवता, धन्यवाद। धन्यवाद श्री माता जी। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे। लेट अस डू प्रणाम एंड थैंक आकाश देवता। लेट अस बैक, टर्न बैक, फेस टुवर्ड्स सन। फिर से पीछे मुड़ेंगे, सूर्य देवता को देखेंगे। सूर्य देवता को धन्यवाद कहेंगे। थैंक यू सूर्य देवता, धन्यवाद सूर्य देवता, आपके आशीर्वाद के लिए और सहायता के लिए। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम श्री माता जी। कोटि कोटि प्रणाम श्री आकाश देवता। दोनों हाथ गोद में, चित्त सहस्रार में, आंख बंद करेंगे। लेट अस टेक बोथ हैंड्स ऑन लैप। लेट अस क्लोज आवर आईज एंड observe both the palms from Sahasrara. With these vibrations, let us take Bandhan, lifting Mother Kundalini slowly. धीरे से कुंडली माँ को उठा के बंधन लेंगे इस चैतन्य से। बंधन लेने के बाद चैतन्य को महसूस करेंगे। लेट अस ऑब्जर्व द वाइब्रेशंस आफ्टर टेकिंग बंधन। हम पूर्णतया निर्विचार हो जाएंगे। हम शोभित करने जा रहे हैं, निर्विचारिता से करना चाहिए। अब हम जहां शोभित करने जा रहे हैं उस जगह को बंधन देते हुए शुद्ध करेंगे। लेट अस क्लीन द प्लेस वेयर वी आर गोइंग टू डू शोभित विद द वाइब्रेशंस गिविंग बंधन। दोनों हाथ धरती माता के ऊपर। लेट अस कीप बोथ हैंड्स ऑन मदर अर्थ। धरती माता को महसूस करेंगे। ब्रह्मरंध्र को, सुषुम्ना को महसूस करते हुए निर्विचार हो जाएंगे। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री गणेश हो, आप ही साक्षात श्री आदिभूमि माता हो। कृपा कर हमें इस शोभित करने की इच्छा रखने के लिए और आपके ऊपर पांव रख के चलने के लिए हमें क्षमा करने की कृपा कीजिए। श्री माता जी, कृपा कर हम सबको सामूहिकता में शोभित करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा कीजिए और हम सबको शुद्धता प्रदान करने की कृपा कीजिए। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री सर्वकर्ता हो, कृपा कीजिए। श्री माता जी, श्री माता जी, यू आर साक्षात श्री गणेश, यू आर साक्षात श्री आदिभूमि माता। प्लीज forgive us for this action and stepping upon you insensitivity towards you. Please permit us to do collective shobit and please cleanse us. Shri Mataji,
Please help us. You are the doer. दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे धरती माता को. लेट अस डू प्रणाम टू धरती माता. Once again, let us give बंदन to the place. फिर से हम बंदन देंगे इस जगह को. अब हम विशुद्धि की उंगली से एक सर्कल डालेंगे. लेट अस ड्रॉ वन सर्कल विद विशुद्धि फिंगर. इधर हम सभी अगुरु को गुरुओं के नाम लिखेंगे जिस जिसके पास हम पहले गए थे और आज भी हमारे परिवार के सदस्य जा रहे हैं. और हम यूट्यूब में फेसबुक में किस किस का प्रवचन सुनते हैं उन सब का नाम लिखेंगे. लेट अस राइट द नेम्स ऑफ द गुरु gurus to whom we followed earlier and still our family members are following. And let us write the names also of the gurus to whom we follow in the gadgets, Facebook, YouTube and all. And if anybody in our family practicing Ashuddha Vidya, let us write their name also. अगर हमारे परिवार में कोई अशुद्ध विद्या का प्रयोग कर रहा है उसका भी हम नाम लिख सकते हैं. अगर हो गया तो लिखेंगे इन सब के कारण साधकों के और मेरे मेरे परिवार के आत्मोन्नति के मार्ग में आड़ आने वाले सभी प्रकार के अड़चने और बाधाएं. All types of badhas because of all these people in the ascent of me, my family and all the sadhakas. Let us give bandhan keeping attention on sahasrara and vibration. चित्त को सहस्रार में और उंगलियों से बहने वाले चैतन्य के ऊपर रखते हुए बंधन देंगे. पूर्ण निर्विचारिता में रहेंगे, बिल्कुल थॉटलेस. इसके जो लिखा है उसके ऊपर हमारे हाथ को खड़ा करेंगे 4-5 इंच ऊपर. Let us take our hand above 4-5 inches and let us surrender all these people at the lotus feet of श्री माता जी. इन सबको श्री माता जी के चरण कमलों में छोड़ देंगे. इन सबके श्री माता जी इन सबके कारण हम सबके आत्मोन्नति के मार्ग में आड़ आने वाले सभी प्रकार के अड़चनों को बाधाओं को दूर करने की कृपा कीजिए. विश्व की समस्त साधकों की रक्षा करने की कृपा कीजिए और इन सब के अंदर की अशुद्ध विद्या का शक्ति का नाश करने की कृपा कीजिए श्री माता जी. Shri Mataji, please remove all the obstacles because of all these people in the path of ascent of me and my family and all the sadhakas of the world. Please remove the power of the Ashuddha Vidya from all these people. All the Ashuddha Vidya practitioners. चैतन्य को महसूस करेंगे. अब हम चप्पल को बंधन देंगे. लेफ्ट लेग वाला चप्पल लेंगे और उसको चैतन्य देंगे. Let us take left chappal and give vibrations. Now, following all the protocols, looking towards sky, observing our sahasrara and left palm, being in thoughtlessness, respecting Mother Earth, we should breathe slowly. अब हम आकाश की तरफ देखते हुए चित्त सहस्रार में और लेफ्ट हैंड को हम बाएं हाथ को महसूस करते हुए पूर्ण निर्विचारिता में रहते हुए धरती माता का आदर करते हुए बहुत हल्के हाथों से हम शोभित करेंगे. शुरू करेंगे. लेट अस स्टार्ट.
जो चैतन्य अंदर आ रहे हैं उसको आने देंगे। वो विशुद्ध को क्रॉस कर चुका है। Allow the nectar to flow inward. Now let us to take our attention to the right Muladhara being in Sahasrara. सहस्रार में रहते हुए हम राइट मूलाधार को देखेंगे। सहस्रार को छोड़ेंगे नहीं। We have to glue our attention on Sahasrara or above Sahasrara. From Sahasrara, let us observe right Muladhara. Left Swadhisthana. सहस्रार से लेफ्ट स्वादिष्टान को देखेंगे। भावसागरा। विशुद्धि।
सहस्रार के ऊपर जाएंगे. लेट अस मूव अबव सहस्रार. थैंक यू श्रीमती जी. थैंक यू श्रीमती. लेट अस स्टॉप. अब हम इसको कलेक्ट करके आकाश की तरफ उड़ाएंगे, पंच तत्वों के हवाले करेंगे. लेट अस कलेक्ट दिस एंड थ्रो टुवर्ड्स स्काई. वंस अगेन क्लीन द प्लेस विद द वाइब्रेशंस. फिर से हम इस जगह को चैतन्य से शुद्ध करेंगे, बंधन देंगे. सेकेंड सर्कल, दूसरा सर्कल डालेंगे विशुद्धि की उंगली से. ये पर्सनल राउंड है, अपना अपना नाम लिखेंगे. लेट अस राइट आवर नेम. दिस इज पर्सनल राउंड. ईगो, सुपर ईगो, अहंकार, प्रत्यहंकार, इंफीरियरिटी एंड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस, हीनता की भावना और श्रेष्ठता की भावना, अगुरु की समस्याएं, कुगुरु की समस्याएं, अगुरु कुगुरु प्रॉब्लम्स, अशुद्ध विद्या, ऑल टाइप्स ऑफ अशुद्ध विद्या, भूत विद्या, प्रेत विद्या, मंत्र विद्या, तंत्र विद्या, पिशाच विद्या, श्मशान विद्या इत्यादि. अशुद्ध इच्छाएं, इम्प्योर डिजायर्स, ऑल टाइप्स ऑफ राक्षसी वृत्ति एंड प्रवृत्ति, सभी प्रकार के राक्षसी वृत्ति और प्रवृत्तियां. अशुद्ध चित्त, इम्प्योर अटेंशन, इम्प्योर अटेंशन ऑफ अदर्स ऑन मी, मेरे ऊपर रहने वाला दूसरों का अशुद्ध चित्त. रिपीटेडली मूविंग माई अटेंशन ऑन अदर्स, बार बार दूसरों के ऊपर जाने वाला मेरा चित्त. सिक्स सटल एनिमीज, अरिषड वैर्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अटैचमेंट्स, साक्षी भाव की कमी, माधुर्य की कमी, क्षमाशीलता की कमी, लैकिंग इन स्वीटनेस एंड फॉरगिवनेस, लैकिंग इन इंटीग्रेशन, समग्रता की कमी, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक असंतुलन, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल imbalances, problems from family members, friends, society, parents and sisters, from workplace, परिवार से, समाज से, फ्रेंड्स से, पितरों से, कार्यक्षेत्र से आने वाली सभी प्रकार की समस्याएं, अड़चने और बाधाएं. अब आपको कुछ लिखना है जो आपके ध्यान की आड़ आती है, उसको लिख सकते हैं. इफ यू वांट इन add any point which disturbs your meditation, please add.
अगर हो गया तो फिनिश करेंगे। मेरे आत्मोन्नति के मार्ग में आने वाले सभी प्रकार के सूक्ष्म अति सूक्ष्म अड़चने और बाधाएं, all types of minute problems and badas in the path of my ascent. Now keeping attention on Sahasrara and vibrations, please give बंधन। बंधन देते हैं, चित्त को सहस्रार में और उंगलियों से बहने वाले चैतन्य के ऊपर रखेंगे। श्री माता जी के चरण कमलों में छोड़ देंगे। खुद खुद हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे ourselves. Let us leave all these problems at the lotus feet of Shri Mata ji. Now let us take right chappal. Give vibrations. राइट वाला चप्पल लेंगे, उसको चैतन्य देंगे। अब हम प्रोटोकॉल्स को अनुसरण करते हुए शुभिट शुरू करेंगे। लेट अस स्टार्ट शुभिट फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स। लुकिंग एट टुवर्ड्स स्काई, आकाश को देखते हुए चित्त सहस्रार में। जो चैतन्य अंदर आ रहे हैं उसको लेंगे हम अंदर। लेट अस अलाउ द वाइब्रेशंस नेक्टर फ्लो इनवर्ड। सहस्रार से राइट मूलाधार को देखेंगे। लेट अस ऑब्जर्व राइट मूलाधार फ्रॉम सहस्रारा। राइट मूलाधार लेफ्ट स्वादिष्ठान टुगेदर। राइट मूलाधार और लेफ्ट स्वादिष्ठान एक साथ हम सहस्रार से देखेंगे। राइट स्वादिष्ठान लेफ्ट स्वादिष्ठान टुगेदर। राइट और लेफ्ट स्वादिष्ठान को एक साथ हम देखेंगे सहस्रार से। सहस्रार को छोड़ेंगे नहीं। राइट स्वादिष्ठान लेफ्ट नाभि को देखेंगे।
Right Swadhisthana and left Nabi together. Today in this collective, left Nabi is under pressure. लेफ्ट नाभि में आज ज्यादा दबाव दिख रहा था. Okay, right nabi left heart. विशुद्धि. आज्ञा फ्रंट बैक लेफ्ट राइट होल आज्ञा. आगे पीछे दाएं बाएं सभी तरफ के आज्ञा को हम महसूस करेंगे असरार से. सभी प्रकार की कंडीशनिंग, राक्षसी शक्तियां, भूतकाल, भविष्यत्काल, अहंकार, प्रति अहंकार, सहस्रार के ऊपर जाएंगे. Let us move above Sahasrara. From there, let us observe super ego area. प्रति अहंकार. सहस्रार के ऊपर से प्रति अहंकार की जगह को हम देखेंगे. सहस्रार के ऊपर जाएंगे. Let us move above.
सहस्रार। सभी उंगलियों को, सहस्रार को, भवसागर को महसूस करेंगे। लेट अस ऑब्जर्व ऑल द फिंगर्स, ऑल द चक्रास ऑफ लेफ्ट palm. थैंक यू श्रीमान जी। रुकेंगे, हम इसको इकट्ठा करके आकाश की तरफ उड़ाएंगे। लेट अस कलेक्ट दिस एंड थ्रो टुवर्ड्स स्काई। इस जगह को चैतन्य से शुद्ध करेंगे। लेट अस क्लीन दिस प्लेस विद वाइब्रेशंस। लेट अस गिव बंधन टिल वी गेट वाइब्रेशंस फ्रॉम दिस प्लेस। इस जगह से हमारे हाथों में चैतन्य आ जाए तब तक हम बंधन देते रहेंगे। हाथ को इस जगह के ऊपर रखेंगे, लेके रखेंगे 2-3-4 इंच ऊपर। लेट अस टेक आवर हैंड अबव दिस प्लेस। श्री माता जी प्लीज एस्टेब्लिश श्री गणेश प्रिंसिपल इन दिस प्लेस। श्री माता जी कृपा कर इस जगह में श्री गणेश तत्व को स्थापित करने की कृपा कीजिए, स्थापित होने दीजिए। चैतन्य देंगे, महसूस कीजिए चैतन्य बहुत अच्छे से फ्लो हो रही है। चप्पल को हम बंधन देंगे। लेट अस गिव बंधन टू द चप्पल्स। गिव सम वाइब्रेशंस। चप्पल को भी चैतन्य देंगे हम। ये हमारी हथियार है, शक्तिशाली रहना चाहिए। तो अब हम दोनों हाथों को बंधन देते हुए शुद्ध करेंगे। लेट अस क्लीन आवर हैंड्स गिविंग बंधन। चित्त सहस्रार में रहेगा। अब हम दोनों हाथ धरती माता के ऊपर रखेंगे। लेट अस कीप बोथ हैंड्स ऑन मदर अर्थ। लेट अस फील हर लव। धरती माता की प्रेम हमारे पति प्रति जो है उसको हम महसूस करेंगे। थैंक यू श्री गणेशा, थैंक यू आदि भूमि माता, थैंक यू श्री माता जी। आपने हम सबसे सामूहिकता में शोभित करा के हमें शुद्ध करने की कृपा की। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। You made us to do collective shobit and cleansed us. Thank you, Shri Mataji. Thank you, Shri Ganesha. Thank you, Adi Bhumi Mata. Koti koti pranamas at your lotus feet. Let us feel her love. जो चैतन्य हम धरती माता से हमारे हाथों में महसूस कर रहे हैं, उस चैतन्य से हम कुंडली माँ को उठा के बंधन लेंगे। Let us take बंधन with these vibrations. जो हाथों में चैतन्य की फ्लो में बढ़ोती हुई उसको हम महसूस करेंगे। Let us observe the increased flow of vibrations in the hands. जय श्री माता जी। सबको जय श्री माता जी। जय श्री जय माता श्री जी टू ऑल। दीदी। जय
दीदी। जय श्री जय माता श्री जी। माता जी। जय श्री माता जी। दीदी जय श्री जय माता श्री माता जी। जी दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू थैंक यू, दीदी। बहुत बढ़िया। जय श्री माता जय दीदी। श्री माता जी। जय श्री माता जय बहुत श्री अच्छा माता जी। लगा जय श्री माता दीदी। जय श्री माता जी। दीदी जय श्री माता दी दीदी। जय श्री जय माता श्री जी माता जी। दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। ये एक चीज पूछना था, जैसे जो आप बोलती हैं हाथ को बंधन दो लास्ट में, दोनों हम्म हाथों, तो जैसे हम्म राइट हैंड तो लेफ्ट हैंड को दे देते हैं, फिर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को दें क्या बंधन? यस 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 और जो जी। और पूछना था, जो आप बोलती हैं बैक करके सूर्य देवता की तरफ हम लोग बैक करके बैठते हैं, लेकिन जब हम लोग सूबीट करने लगते हैं तब तुरंत फ्रंट होके बैठ जाना पड़ता है ना? थोड़ी देर के लिए हमने बैक करके बैठे थे ना, आकाश क्लाउड वाइब्रेट किए, हाँ, क्लाउड की तब तरह। तक हम क्लाउड वाइब्रेट करते समय बैक आज्ञा सूर्य देवता की तरह ही रहता रहा ना। हाँ, तो हाँ, तो फिर बाद उधर में बाद में पीछे मुड़ लिए हमने सूर्य देवता की तरफ, बाद में हाँ, शुभिट किए। हम्म हम्म, जब सूबीट करते हैं तो फिर फ्रंट हो जाएंगे ना, क्योंकि जिधर क्लाउड है उधर ही सूर्य देवता आते हैं। शुभिट हम कहाँ कैसे भी करके बैठ सकते हैं, ऐसा अच्छा। नहीं है, मगर हमने सूर्य देवता को थैंक्स बोलना है ना, धन्यवाद करना है ना। हाँ। उसके लिए हमको एक बार सूर्य देवता को देखना पड़ता है ना। अच्छा, ठीक। हाँ, उसके बाद फिर से आपको सूर्य देवता की तरफ बैक आज्ञा रख के बैठना है तो बैठ सकते हैं। अच्छा। हाँ, हम्म ठीक है। जय श्री माता। ठीक, ओके। जय श्री माता जय श्री जी। माता जी ओके। जी। जी जय श्री जय श्री माता माता जी। जी। जय श्री माता जी। ओके, चलिए हम रुकेंगे। हैव ए ब्लेस्ड डे, हैव ए निर्मल डे। हम सब साबुन लगा के हाथ पाँव धोएंगे। जय